is for the fire sign. The tarot forecast for the fire sign for the full moon tomorrow until the next full moon. Okay. Again, I think this is all about sword, because in any which ways the full moon tomorrow is in the I think this is, yeah, the full moon tomorrow is also in the sign of Aquarius, right? So basically we are doing it for the fire sign. I'll just repeat, the fire signs are Aries, Leo and Sagittarius, and this is the card that we pull out for you is the 8 of Swords. Here in this case what we read is that this is the 8 of Swords. So you see here is 8 and here is this figure surrounded by 8 swords. Again, you know, this is about mental clarity and mental confusion, you know. So you are in a state, so anyone who is here a fire sign, if you want to and ask me question, you're more than welcome to do that. But otherwise this 8 of Swords imagery, please don't misunderstand that this is about, you know, this is a very negative looking card. It's not that. It is about this person. You see this person who's standing in that swampy कीचड़ में खड़ी हुई है, and then there is this house which is in the background. और ये 8 swords है. अभी मैंने आपको क्या बताया? Swords is what about mental clarity, हाँ? Mental clarity. तो ये 4 of Swords है. ये जो है वो 8 of Swords है, right? So this 8 of Swords actually depicts of a person who is caught between a rock and a hard place. यानी कि बहुत difficult decision के बीच में ये जो औरत है, जो person है, individual है, वो फंसा हुआ है. तो उसको नहीं समझ में आ रहा कि वो इससे निकले या उसको या सिचुएशन ठीक होगी, क्योंकि होता है ना कभी कभी हमारी परिस्थिति ऐसी होती है कि हमको लगता है यार कि शायद अब थोड़ा सा और कोशिश करूं तो ठीक हो जाए, अब थोड़ा सा और कोशिश करूं तो ठीक हो जाए, या फिर आपको लगता है कि यार इसको छोड़ दूं, यू नो. सो इस तरीके का क्रॉस रोड वाला जो कंफ्यूजन वाला जो सिचुएशन आती है ना, वो 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो जो इंडिविजुअल है, इट इज नॉट अबाउट अ मैन और अ वुमन की औरत है आदमी, इट इज नॉट अबाउट दैट, राइट? Let me just first tell you this. It is more so about the individual, the person as an energy is like that. Basically, they are tied up. But the tied up is something which is very loose. It's not something which is like very tightly chained नहीं है. You know, you can see that. And सबसे important चीज़ है, this person is also blindfolded. So blindfolded का क्या मतलब है? That they are not able to see beyond their situation. They feel they are tied up and they feel that there is a cage around them, ना? But आप ये देखो, ये जो cage है वो सामने से खुला हुआ है. Do you understand? So do you understand the connotation of 8 of Swords? The 8 of Swords energy is about that you feel trapped in a situation, but actually you are not. But for you to be able to realize that you are not trapped in the situation, you have to have clarity of thought. हाँ, जो कि यहाँ नहीं है. हाँ, अगर अब इस कार्ड को अगर मैं पलट दूँ तो ये सारी स्वॉर्ड जो है वो नीचे गिर जाएंगी और ये जो है ना, ये कीचड़ हट जाएगा. बेसिकली सो दिस इज, कभी क्या होता है ना, जब नॉट सो पॉजिटिव कार्ड ये नेगेटिव कार्ड मानते हैं कि इट्स अ नो कार्ड, राइट? लेकिन जब नो कार्ड को आप पलट दोगे तो इट बिकम्स अ येस कार्ड, राइट? So basically what the tarot is trying to teach you is that it is all about that how you're looking at your situation. Okay, it is important for you to look it from a perspective of glass half full or half empty, as I told you last time. So for all my 8 of Swords people who are fire sign at the moment, if you are caught between a rock and a hard place, के रिश्ते में रहें ये छोड़ दें, नौकरी में रहें या छोड़ दें, you know, so health वाला aspect है, ठीक होगी कि नहीं ठीक होगी, it is important for you. What the tarot is saying, take a step back. सबसे पहले to reach out for help in the sense that basically सबसे पहले तो अपनी आंखों की पट्टी हटाइए. आंखों की पट्टी कैसे हटेगी? For you to be able to reach out to help, because आप अपनी सिचुएशन नहीं देख पा रहे हो, बट सामने कोई होगा है जो आपकी सिचुएशन को बेहतर तरीके से, और सामने ऐसे केसेस में क्या होता है ना, ऐसे केसेस में बहुत स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन होती है दैट गो एंड सीक टैरो रीडिंग. यू नो, दिस इज द काइंड ऑफ सिचुएशन. व्हाट डज टैरो रीडिंग डज फॉर यू? द टैरो रीडिंग एक्चुअली टेल्स यू एन ओवरऑल एडजेक्टिव, you know, a bigger picture which you cannot see because you are in the middle of it, right? So tarot allows you to be able to see the bigger picture so that you are able to make a decision which actually works in your favor, right? So 8 of Swords is about that now that you are in that kind of a situation. This is not about ठहर जाओ. 4 of Swords वाला नहीं है कि अभी रुक जाओ, अभी कुछ मत करो. दिस इज अबाउट दैट प्लीज डू समथिंग अबाउट योर सिचुएशन. अगर आपको इस तरीके की उलझन है कि लाइफ एंड डेथ है और नहीं समझ में आ रहा कि कहाँ जाएं, देन प्लीज डू रीच आउट फॉर हेल्प, because your situation is not that bad as you are thinking. You know, the reality is not that bad as the memories in the imagination that you are suffering. It is going to get better provided you are able to take charge. अगर आप
टेक चार्ज नहीं ले पा रहे हो, आपके हालात परिस्थितियां वैसी नहीं है, देन प्लीज डू रीच आउट फॉर हेल्प। और कहीं ना कहीं क्या होता है ना कि अगर आपका दिमाग इसमें क्या होता है, मेंटल क्लैरिटी नहीं है लेकिन इंट्यूशन तो है, आभास तो है, तो अगर आपका दिमाग और दिल नहीं काम कर रहा तो आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनने की कोशिश करो। और वो कैसे करोगे, जो मैंने आपको 4 ऑफ स्वॉर्ड्स में भी बताया, बाय allowing yourself to be spiritual self. You have to use tools which are allowing you to be the kind of spiritual person that you can become. Okay, so we now move on to